patriotism. Let's start the reading and explanation of the chapter. Patriotism means love for country, all right. And one thing I would like to tell you before starting the chapter is that patriotism is a quality, okay, but a person who has this quality is known as a patriot. So patriot is a noun. Patriot is the person who has the feelings of patriotism, okay. Just to make the term clear. Learning outcomes. By the end of this unit, students will know the meaning of patriotism, recognize the author's point of view, comprehend the basic themes in the text, know the use of dictionary, identify the kinds of sentences and their use, guess the contextual meanings of the words. In your opinion, who is a patriot? So I've already told you that patriot is a person who has the feelings of patriotism, who loves his country. Can you give an example of patriotism? Patriotism includes basically all those examples of the people who sacrifice their life for the people. And it's not only about sacrificing, it's about doing something about for your country. For example, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. हमारे जो ईदी साहब थे पाकिस्तान में, who died, वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या करते थे? वो अपने कंट्री के लिए क्या करते थे? अपने लोगों के लिए. उनको अपने कंट्री से, अपने लोगों से प्यार था, इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की हुई थी. एंड थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन ही यूज्ड टू हेल्प पीपल एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वर्किंग टुडे. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है पैट्रियोटिज्म की. ठीक है, इसी तरह जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो जाते हैं, अपनी जानों पे खेलते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं कि हमारे मुल्क को कुछ ना हो. दे लव देयर कंट्री के लिए आप कुछ भी करो, वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स में आता है. इसके लिए ज़रूरी नहीं आप कुछ बड़ा करो, छोटी से छोटी चीज़ भी होती है. फॉर एग्जांपल ऑन द डे ऑफ 14 अगस्त को क्या होता है? हम लोग क्यों ग्रीन कपड़े पहन लेते हैं, क्यों फ्लैग्स लेके फिरते हैं? बिकॉज वी लव आवर कंट्री. हमारे अंदर वो फीलिंग है पैट्रियोटिज्म की. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. We will start with paragraph number 1. Okay, this paragraph. So, patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Okay, अपने motherland से प्यार करना, or to have the feelings of affection towards our country. A patriot loves his country. So patriot is a person who loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. And a patriot is a person who is never afraid to give his life for the country. He is always ready to die for his country, all right? The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. So commendable means वेरी क्रेडिटेबल, एक्सट्रीमली एडमायरेबल, एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है. पैट्रियोटिज्म वो क्वालिटी है. सो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल क्वालिटी. मूविंग ऑन टू पैराग्राफ नंबर 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. Now see, एक बंदा जिसको अपने कंट्री से प्यार नहीं है, जिसको कोई परवाह नहीं है, वो कंट्री को गंदा करता रहेगा. ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करेगा. इवन कि जो चीज़ें हैं भी हमारे कंट्री में, द गुड थिंग्स, वो उनको भी ख़राब करेगा. ही विल डेफिनेटली स्पॉइल द गुड सिस्टम्स. लेकिन जो बंदा जिसके अंदर फीलिंग्स हैं पैट्रियोटिज्म की, हु लव्स हिज कंट्री, वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उसको ये स्ट्रेंथ देती हैं, ये करेज देती हैं कि वो अपने कंट्री को, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करे. ठीक है, उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को, उसके रिचुअल्स को. फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेनिटी, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. So एक पैट्रियट के लिए कंट्री पे कोई भी बात आ जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि why does this happen. Okay, Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. So जहाँ पे sacrifice की बात आती है वो तभी आती है whenever there comes the point of preservation and protection of these values. जब भी country की values पे बात आ जाए तो उनको protect करने के लिए a patriot can do anything. Anything का मतलब है anything. He can even die for the sake of his country. Alright, number 3. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. अच्छा, now see in the first paragraph इन्होंने आपको बताया कि what is the meaning of patriot. Patriot का मतलब क्या है, patriotism का क्या मतलब है. ठीक है, second paragraph में उन्होंने बताया कि patriotism की feeling से होता क्या है, what happens
to a person who has this feeling of patriotism, who has this quality of patriotism, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर इतना strength और courage आ जाता है that he can even sacrifice his life for the sake of his country. अब वो थर्ड पैराग्राफ में हम एक एग्जाम्पल देने लगे हैं. ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट, द ऑथर इज गोइंग टू टॉक अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, हु वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. कायद आज़म को हम पैट्रियट क्यों कहते हैं? Because कायद आज़म basically was the person who came up with the idea of a separate homeland. ठीक है, कायद आज़म ने ही एक नए होमलैंड की बात की थी. उन्होंने कहा था एक प्रॉपर कंट्री होना चाहिए, ठीक है, जहाँ लोग रहें, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो, ठीक है. तो ही इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियट. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one unit and strong nation. Galvanizes की जो यहाँ पर टर्म यूज़ हुई हुई है, दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म जो यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, बहुत इन्फ्लुएंशियल टर्म यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, जिससे आपको ये आइडिया मिल रहा है. गैल्वेनाइजेस का बेसिकली जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो है टू कोट विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स. अगर हम किसी चीज़ को मेटल की थिन लेयर से कोट कर दें तो उसको कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है. तो कायद आज़म कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म होना चाहिए कि हमारा नेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमारा नेशन ऐसा हो जाए जो जिसके साइड पे एक मेटल कोटिंग हुई हुई है, ऐसा हो जाए हमारा नेशन जिसको कोई टच ही ना कर सके, ठीक है. लाइक वी मस्ट बी सो मच पेट्रियाटिक. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4. The spirit of patriotism makes us alert in the wake of foreign invasion. अब ये एक और क्वालिटी इन्होंने फोर्थ पैराग्राफ में बता दी है कि पैट्रियाटिज़म के स्पिरिट की वजह से हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं कि हमारे कंट्री पे कोई फॉरेन अटैक ना हो, इन्वेडर्स का अटैक ना हो. In the history of Pakistan, there are many instances, main occasions, examples when people laid down their lives for the defense of the country. अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पैट्रियाटिज़म था हमारे लोगों में. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabbir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfouz, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar Lalik Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. तो इन सब ने क्या किया था, इनको शहादत नसीब हुई थी, ठीक है. ये सब लोग अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए दे gave up their lives. All of them were awarded निशाने हैदर. निशाने हैदर तो आप सबने सुना होगा, इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड. उन सब लोगों को मिलता है who lay down their lives for the sake of their country. So the highest military award given to great patriots who lay down their life for the country. Okay, so moving on, number 5. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the world of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead who never to himself has said, this is my own, my native land. So यहाँ पे उन्होंने बात की है कि पैट्रियोटिज्म सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक लाइफ स्पिरिट है, क्योंकि ये हमें रियलिटी के अंदर कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए ये लाइफ स्पिरिट है, ठीक है. सो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्होंने कोट डाला हुआ है ऑफ S.W. स्कॉट, और उससे हमें पता चलता है कि S.W. स्कॉट इज सेइंग कि ऐसा बंदा जिसके अंदर ये फीलिंग ना हो पैट्रियोटिज्म की, ही इज़ लाइक अ डेड मैन, ठीक है. उसके ऐसा लगता है उसकी सोल, उसकी जो रूह है वो मरी हुई है, ही इज़ लाइक अ डेड मैन, ठीक है. मतलब ये कैसा बंदा है जिसने आज तक अपने दिल में नहीं कहा कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरा लैंड है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, बस ही इज़ जस्ट लिविंग हिज लाइफ. सो S.W. स्कॉट की जो ये कोट है, इससे वी गेट टू सी कि पैट्रियोटिज्म की फीलिंग हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, ऑलराइट, these are the word meanings given to you. Devotion, loyalty, commendable, admirable, supreme, highest in status, value, worth, native from one's motherland. Then you have the question answers.
Alright, how will you define patriotism? Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Question number 2, what are the qualities of a patriot? A patriot loves his country and is ready to sacrifice his life when the need arises. Question number 3, as a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? So, as a citizen of Pakistan, my first and foremost duty is to stay loyal to my country. I should always be willing to sacrifice my life for the sake of freedom and honor, and for the progress of my country. You can also write prosperity of my country at both international and national level. You can modify this answer as well. Okay, you can add up your own thoughts as well. Question number 4, what makes us stay alive in the wake of foreign invasion? It is the spirit of patriotism that makes us stay alive in the wake of foreign invasion. Question number 5, how, as will you elaborate Kaid's quote, we must develop a sense of patriotism that galvanizes us all into one united nation. So if we develop a sense of patriotism, we shall not fall prey to disunity, disharmony, provincialism and disintegration. The spirit of patriotism will keep us united and strong. So that's all.